Good evening everyone, warm welcome to your own YouTube channel. We call it as QUICKNORM. My name is Madhav. I welcome you all in the next session of Finance Current Affairs, which is live on Tuesday, Thursday as well as Saturday at 5 p.m. As you all know, in this particular session we cover the most important current affairs related to the finance world. Especially we focus on the news related to RBI circulars, SEBI notifications, NABARD updates, IFSC updates, and many more. So before I start with the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go. Just give me yes sir, so that we can begin the discussion without any further delay. Just give me yes sir, so that we can begin the discussion without any further delay. Quickly. Done, good to go. ठीक है. So as you all know, current affairs for the month of June are important for the RBI Grade B examination, but we will be covering till 7th of June only. So 7th of June तक के जो current affairs है, they are really very important for your upcoming RBI Grade B examination. और उसके बाद के जो करंट अफेयर्स है, वी वोंट बी कवरिंग फॉर फेज 1, बट यस वी विल बी कवरिंग इट फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन. तो फेज 1 के लिए अगर आप 7th ऑफ जून तक के करंट अफेयर्स कवर करके जा रहे हैं, देन ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में कुछ और नहीं पूछा जाएगा. और एक चीज और, जो सेशन हमारा कल वाला था, दैट इज May revision of finance current affairs. Today it will be conducted. The part 2 of that session will be conducted at 8 p.m. So if you haven't revised it, revise करके आना. और आज 8 बजे बाकी के बचे questions को, बाकी की बची news को we will be covering. ठीक है जी, start करें. Okay then. Here we go with the first news. The first news is related to the term that is IIP series. And this news is related to the base year shift. अब यहाँ पे अगर मैं 2-4 बातें करूं इस न्यूज को स्टार्ट करने से पहले, I hope you guys remember, government has revised the GDP base year. Government has even revised the base year for GVA as well as CPI combined base year is also revised. I hope you remember. If you remember, then please give me the answer. What is the new base year for GDP calculation, for GVA calculation as well as CPI combined calculations? I am waiting for your answers in the comment section. Moving back to the news. If I move back to the news says India's monthly industrial activity indicator is known as Index of Industrial Production. Now the question is, sir, सबसे पहले we need to understand the term very clearly, that is Index of Industrial Production. The moment this question is asked to me, and if somebody asks me to give me the answer, what will be my answer to this particular question? My answer would be very clear. Sir, Index of Industrial Production is basically a macroeconomic indicator. Please remember, macroeconomic indicator, which basically measures the short-term change, in the volume of physical production of industrial goods. I repeat, if somebody asks me, so what is this IIP which you are talking about? IIP is basically a macroeconomic. It's not micro, it's macroeconomic indicator. Macroeconomic indicator which is responsible or which help us to understand the change in volume of production, but what production I'm talking about? So volume of production of physical goods. Volume of production of physical goods, those goods which can be touched. That means we do not include services into it. Remember that it's a short term. Why we say short term? Because it is calculated on regular intervals, and generally, if I'm not wrong, it is calculated on monthly basis. Say yes or no.
Yes, so the answer is absolutely correct. Sir, it is released on monthly basis, and the ministry which is responsible, so the organization is responsible, that is National Statistical Office. Ministry is Ministry of Stats and Program Implementation is responsible for presenting this particular document or this particular instrument. ठीक है जी. अब इसमें क्या कहा गया? सर, the revision has been done that now the base year to calculate the change, to measure the change in the volume of production of physical goods have been revised from 2011-12 to 2020-22-23. ठीक है जी. अब अगर मैं कहूं जीडीपी का पुराना फाइनेंशियल ईयर, पुराना बेस ईयर सेम था 2011-12, जीवीए के लिए भी बेस ईयर सेम था, दैट इज 2011-12, बट उन दोनों के लिए नाउ द न्यू बेस ईयर इज 2022-23, एंड इन केस ऑफ सीपीआई सर द बेस ईयर इज 2024. But if I talk about IIP, sir, IIP is also a instrument which basically identify or which basically compares the status of two datas, current and as well as past. So that is the reason here also the past data has been revised, or the base has been revised, the comparison, I would say measuring tape has been revised. So this base year has been updated from 2011-12 to 2020-22-23, aligning it with not only GDP but also with WPI series, because now for WPI series also we have the same base year, that is 2022-23. Even for gross value addition we have the same base year, that is 2022-23. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट. अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर दिस रिवीजन व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, सर इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द 10th रिवीजन ऑफ इंडेक्स to better capture the structural changes, technological progress, evolving industrial composition of the economy. तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो रिवीजन है, this is the 10th revision of this index which has been done recently, and in this revision the base year has been revised from 2011-12 to 2022-23. अरे बोलो, क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? Any problem till this point? Do reply everybody. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट है कि सर not only the base year has been revised, but while calculating the IIP, now new goods, new products will be added. The scope has been expanded. Now in the new series, it will include gas supply, even it will include water supply, it will include sewage as well as waste management, along with more breakdowns of electricity and mineral categories. तो भैया हम जानते हैं कि आज की डेट में gas, water supply, sewage, waste management, it's a very important aspect for the industries, and it plays a really very important role as a input cost. And in terms of its production, it's really very important to judge, it's really very important to calculate what kind of changes has been recorded. So keeping that in mind, gas supply, water supply, sewage as well as waste management have been included under the same calculation. Now we have a wider basket. The index has been expanded to 463 items. Earlier the items were 407. अगर मैं बात करूं जैसे हम WPI कैलकुलेट करते हैं या फिर हम CPI कैलकुलेट करते हैं, while making these calculations we create a basket of goods, and for that basket of goods we identify the current price and we identify the comparing price, and on the basis of comparison we calculate the inflation. In a similar manner, when we talk about IIP, sir, in case of IIP also we have certain basket of goods which are taken into consideration, and to check what is the current production, what was the past production, so that we can understand the change, so that we can calculate the increase or decrease in the IIP or the production value or the volume. So in that particular case, earlier the items were 407, but recently Ministry of Stats and Program Implementation has subtracted 64 outdated goods which are not demanded, which are actually not supplied. So there is no need
to include them under the IIP because हर बार उनका जो data होगा that will be the same. Last time 0, this time 0, next time also 0. So there's no point. So remove it. So इसको remove किया, then this total comes down to 343. But along with this, many new items have been added. So 120 items have been added, due to which the total has increased from 407 to 463, where the addition is done of 120 items and removal is done of 64 items. This data is very important. Direct question आएगा, याद रखना. अब कोई पूछे कि सर न्यू इंक्लूजन्स क्या है? सर न्यू इंक्लूजन्स है सीसीटीवी कैमरास, नॉन वुवन टेक्सटाइल्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, वैक्सीन्स, स्टेंट्स, दे ऑल आर एडेड. बट क्या रिमूव किया? सर केरोसिन रिमूव कर दिया. CFL लाइट्स, याद है CFL लाइट्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स now they have been removed. Why they have been removed? Because they have been replaced by the LED lights. I hope आपको पता होगा लाइट इमिटिंग डायोड, आज की डेट में जितनी भी आपकी लाइट्स है, दे आर LED लाइट्स. अगर आपको याद हो, CFL जो घर में लगती थी, लंबी सी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर था उसका, अगर आपने कभी देखा हो, जनरली अ कैंडल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, देखा होगा आपने ड्राइंग, शायद आप समझ रहे होगे मेरी भावनाओं को. तो दिस वाज द कैंडल लाइट स्ट्रक्चर. आजकल इसकी जगह पे बल्ब आ चुके हैं, और ये जो बल्ब है, दे आर बेसिकली व्हाट? सो दीज आर द LEDs, दे आर लाइट emitting diodes. Earlier they were CFLs, which have been removed, which have been replaced. That is a point. The next point is a new methodology has also been incorporated, which says the revised series retains NEC, that is not elsewhere classified items. So it also retains all those items which are not classified anywhere else. So we call them as not elsewhere classified items, improving representatives or representativeness by identifying specific products instead of redistributing the output. तो भैया यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल दिया कि जो भी आइटम्स हैं जो कहीं और किसी और वे में क्लासिफाई नहीं है, we will be including them, we will be retaining them in order to come up with a better result. Next, we have updated data source. Manufacturing weights are based on ASI data. They are based on ASI data for financial year 2022-23, while the other sectors, they use measurable outputs and inputs from the agencies like Indian Bureau of Mines. Indian Bureau of Mines as well as ASI data के basis पे these manufacturing weights are calculated, and on the basis of those weights the further calculation is done that what is the current status of IIP, how well it is increasing, how well it is decreasing. ठीक है जी. अगला पॉइंट है deflator reform. So committee has recommended shifting from WPI based deflators to producer price index once it becomes operational. क्या है ये? ध्यान से सुनना. तो जब IIP का कैलकुलेशन किया जाता, while making or while doing the calculation for IIP, earlier it was related to, or it was linked to WPI, but in WPI we have manufactured items, primary items as well as fuel items. Now IIP now the recommendation has come कि भैया IIP basically talks about the production. Then rather than linking to WPI, which has a broad coverage of items, we should link to a particular index which will be only and only focusing on production wala part. So we will be talking about production price index, which is going to calculate the change in production prices, the change in production inputs, the change in producers input, producers price of production over the period of time. तो बहुत जल्द ये डेटा आना शुरू हो जाएगा. जैसे हमारे पास WPI बेस्ड इन्फ्लेशन आती है, वैसे PPI बेस्ड इन्फ्लेशन भी आएगी, एंड देन इट विल बी लिंक्ड विद IIP, विल बी लिंक्ड विद PPI. ठीक है. IIP will continue to compile monthly data by NSO with data released around 28 days after the reference month, starting with April data on 1st June. तो ये पॉइंट समझ आया कि भैया सिंपल सी बात है कि जिस दिन मंथ का डेटा आएगा उस मंथ के डेटा को यूज किया जाएगा. सो डेटा इज बेसिकली रिलीज्ड अराउंड 28 डेज आफ्टर द रेफरेंस मंथ. तो अगर मान लो रेफरेंस मंथ हमारा अप्रैल है, तो उसके 28 डेज के बाद यानी कि 29th ऑफ मई, तो जनरली जो अप्रैल मंथ है, वी विल हैव द डेटा फॉर दैट ऑन 1st ऑफ जून. Policy significance that why this change has been done, sir. IIP is expected to provide more accurate reflection of India's industrial structure, output trends and economic momentum, because of which its updation, its inclusion, its revision with respect to the GDP WPI was must, and finally it has been done.
ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ लो. इफ एवरीथिंग इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर. अगर थोड़ा भी जग सोना सोना सा है, कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, कोई टर्म आपको लग रही हो कि नहीं समझ आ रही, प्लीज पूछ लो. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट. एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर. वी विल बी मूविंग अहेड. जल्दी से बता दो. डन? कोई डाउट नहीं है? इंडेक्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने बहुत बार पढ़ाई है. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. Let's try to solve a question. The question is now on your screen. With reference to the revised Index of Industrial Production series released by Government of India, the base year has been revised from 2011-12 to 2022-23. बिल्कुल सही है सर, correct. The revised IIP series aligns with updated GDP and WPI series because their base year is revised. Now IIP base year is also revised. The new series expand coverage by including gas supply, water supply, sewage and waste management. True, the number of items in the basket have now been updated to 463 from 407, where inclusion of 120 items is done and 64 items have been removed and total increases from 407 to 463. सही नहीं है? सही नहीं है? अच्छा सर, ध्यान से पढ़ो. द नंबर ऑफ आइटम्स इन द आईआईपी हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 407 टू 463. बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, बहुत बढ़िया. मैं तो अभी जानबूझ के इसको पहले टिक करता, फिर कहता यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर वापस आता, जो हमेशा मैं आप लोगों के साथ करता हूं. बट यू आइडेंटिफाइड इट प्रीटी अर्ली. वेरी गुड, इंप्रेसिव. चलो. The product such as CCTV cameras, vaccines, aircraft parts have been added, but CFL tube lights, kerosene items are removed. Remember that as well. So keeping that in mind, answer क्या होगा sir? 1, 2, 3 and 5 are the correct options. 1, 2, 3 and 5 are the correct answers. एक बार मुझे बता दो. आई होप मेरी आवाज क्लियर है. देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी कट बट आई गेस इंटरनेट की स्पीड ठीक है. यू कैन हियर मी. लेट्स कंटिन्यू. गिव मी अ बिग thumbs up in the comment section, and if you haven't hit the like button, do hit the like button guys. If you haven't liked the session yet, do hit it so that I can get to know that yes, you are enjoying. Chalo ji. Now let's move on to the homework question. Here you go guys. Take the screenshot. Take the screenshot. 1, 2, 3, 4 and 5. That's done. So I want you to give me the answer of this question in the comment section. Moving on to the next news. The next news is very interesting, and if you remember, we have discussed about the same in our yesterday's 7 p.m. session, if you remember. So right now, you can make payment using the QR code. QR code payment can be done in how many? Can be done in how many cities? Sorry, in how many countries? It can be done in how many countries? What will be the answer? So right now it can be done in 9 countries. The latest one is Cambodia, which we are going to cover today. लेकिन उसके अलावा how many countries we have? If you remember in the last session, I have given you the names of all the 9 countries. Now I'm expecting from you. It's UAE, it's Singapore, it's Bhutan. Go on. बताओ भाई, आज आपकी टर्न है बताने की. मैं तो कल बताया. Today it's your turn. I'll wait for few more minutes. Otherwise, I'll give you the answer. अगर किसी को लग रहा हो सर आप कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, तो भाई मैं कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं. मैं वही डिमांड कर रहा हूं जो मैंने कल पढ़ाया. सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम यू गाइस. चलो मैं बताऊं.
तो इसमें हमारे पास है भूटान, हमारे पास है भूटान, भूटान के साथ साथ वी हैव फ्रांस, फ्रांस के साथ वी हैव यूएई, फ्रांस के साथ वी हैव यूएई, वी हैव मॉरिशियस, वी हैव कतर, वी हैव मॉरिशियस, वी हैव कतर, इवन वी हैव नेपाल। एक कंट्री और बची, इफ यू कैन आइडेंटिफाई, एक कंट्री और बची, इफ यू कैन आइडेंटिफाई। मैं बताऊं, नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। जय श्री राम। तो आंसर क्या होगा? श्रीलंका। तो भैया 9 कंट्रीज है, चेक कर लो कहीं मैंने कोई कम तो नहीं लिखी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, में तो ज्यादा लिख दी यार। अच्छा, यूएई मैंने दोबारा लिख दिया, सॉरी, यूएई दोबारा लिख दिया, तो ये हो गई 9 कंट्रीज ओनली। दिस इज करेक्ट। वियतनाम नहीं है भाई, वियतनाम में क्यूआर कोड आप स्कैन नहीं कर सकते। देयर इज अ टाई अप विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई पेमेंट्स, लेकिन वियतनाम वाली न्यूज आप एक बार पढ़ के आइएगा। वियतनाम इज योर होमवर्क कि वियतनाम में इंडिया ने क्या टाई अप किया है, हाउ इट इज डिफरेंट द वे वी आर डिस्कसिंग ओवर हेयर। हटा दिया, जो डबल हुआ था वो हटा दिया। डन। चलो न्यूज पढ़ते हैं। न्यूज बड़ी सिंपल है सर। आरबीआई हैज बीन वर्किंग टू कनेक्ट इंडियाज यूपीआई with the fast payment system of the other countries, as we have witnessed, in order to make international payment cheaper, faster, safer, and more convenient. These efforts are in line of the roadmap which has been set by G20 in order to improve the cross-border payment system. That means decrease the cross-border payment transaction cost and decrease the time to complete the cross-border payment settlement. Under this initiative, Cambodia officially launched payment system connectivity on 2nd June in Phnom Penh, Cambodia. This is the first phase of the cooperation between NPCI International Payments Limited as well as Akleda Bank of Cambodia. So this project is obviously implemented under the guidance of RBI, as well as this project is implemented under the guidance of National Bank of Cambodia, which enables the interoperability between India's UPI system and Cambodia QR code payment network, which means अगर Indian Cambodia travel कर रहे हैं और Cambodia के merchant ने एक QR कोड दिया और उस QR कोड को जैसे ही स्कैन किया गया, उस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन किया गया, तो आप अपने यूपीआई ऐप से यू कैन मेक द पेमेंट इन कैम्बोडिया। दैट कैन बी डन। ठीक है जी। अब with this launch, Indian travelers visiting Cambodia can make payments directly using UPI enabled mobile applications by scanning KHQR codes, which are Cambodia's national QR payment standards, and more than 4.5 million merchants across Cambodia are enabled with KHQR. तो उनके पास वो QR ऑलरेडी है, बस आप उसे जाके स्कैन करो अपनी ऐप से and you can make the payment without any issue. That is something which is important, that is something which is easy. तो भैया अगर वियतनाम इंक्लूडेड है, अगर वियतनाम इंक्लूडेड है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब साइंड कंट्रीज 10 हो गई which are going to receive the payments through QR code. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि UPI has tied up with 10 nations where through UPI platform you can make the payment through the QR code which are generated in the foreign countries. Is that a case? या इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी में कुछ डिफरेंस है। प्लीज गिव अ ट्राई, एक बार पढ़ लो। क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो अगली क्लास में बता ही दूंगा यार, याद करा देना, बता दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, वो क्या? Under the new arrangement, real-time payment to merchants in Cambodia in a secure, transparent, and convenient manner, it reduces the need for carrying cash and provides an alternative card payment based while traveling abroad. So India के लिए अब Cambodia travel करना और आसान हो गया कि भैया अब आपको QR कोड से पेमेंट करने का कैपेसिटी है। Current launch covers payment by Indian travelers in Cambodia. In the second phase of the project, Cambodian travelers who will be visiting India, they can also make payment using the UPI QR code through their own application so that the funds can be transferred directly to the into the merchant's account or Indian merchant account. ठीक है जी, क्लियर है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। Now let's try to answer the question.
The initiative enables the travelers to make payments in Cambodia using UPI application. That is correct. The first phase of the project allows Cambodian travelers to make UPI payments in India. No, sir, this will happen in second phase. The payment linkage is based on interoperability. Yes, ये point याद रखना. Linkage is based on interoperability between UPI and Cambodia's KH-QR system. क्या ये सेम ट्राई अप आरबीआई ने वियतनाम के साथ किया है या नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन. दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ broader effort aligned with G20 roadmap. That is correct. The project has been implemented through collaboration between NPCI as well as Akleda Bank. That is also correct. So keeping that in mind, answer क्या बनेगा सर? C ऑप्शन आंसर बनना चाहिए. 1, 3, 4, 5 आर द करेक्ट आंसर्स. बहुत बढ़िया. लो जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द आंसर्स. एक काम करते हैं यार, अब से आप क्लास के जस्ट बाद आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में एंड बाय 12 AM ऑन द सेम डे आई विल बी आंसरिंग. अगर आपने आंसर किया तो आई विल बी गिविंग यू द करेक्ट आंसर्स बाय 12 AM एंड even if you want I can add few more questions in the comment section only so that you can get more engaged with those questions. If you want, I can do that as well. लेकिन उसके लिए you have to show me some interest that yes, you guys are interested in this particular practice, in this particular discussion. Okay, चलो moving on to the next news. अगली news काफी ज्यादा important है. The next news talks about financial year 2025 expenditure to stay within fiscal deficit target. कल का एक सेशन जो हमारा हुआ था, उस सेशन में एक कंफ्यूजन हुई. वो कंफ्यूजन ये हुई कि सर आपने जो डेटा दिया क्या वो सही है या नहीं. वो डेटा जो मैंने दिया था दैट वाज ऑफ मई, ठीक है. लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जून का डेटा दे रहा हूं और ये जून का डेटा आपको याद रखना. इफ एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड with respect to the data which I am going to share, this you have to answer in the examination. ठीक है जी, इसके अलावा कोई और आपको आंसर नहीं देना. This is going to be your Bible with respect to the terms which I am going to discuss. So सबसे पहला, according to the Controller General of Accounts, the central government has reduced its total expenditure by about 60,000 crore rupees in financial year 2025-26. तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट से इसके एक्सपेंडिचर के उसके मुकाबले जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है दैट वाज -60,000. ये पॉइंट समझ आ रही है? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको जरूर बताना चाहूंगा कि whenever we talk about budget guys, whenever we talk about budget के केस में you have 3 figures which you need to remember. फर्स्ट फिगर इज बजट एस्टिमेट्स जो बजट के डॉक्यूमेंट में दिए जाते हैं. सेकंड इज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स व्हिच आर रिवाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड देन वी हैव द एक्चुअल डेटा. एक्चुअल डेटा मींस एक्चुअली क्या स्पेंड हुआ है, एक्चुअली क्या अर्न हुआ है, दैट इज द एक्चुअल डेटा. ठीक है. सो यहां पे टू कीप द फिस्कल डेफिसिट विद इन द टारगेट दैट इज 4.4% ऑफ जीडीपी. तो भैया अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अपने 60,000 करोड़ रुपए का खर्च कम किया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ताकि जो उनका फिस्कल डेफिसिट है दैट शुड रिमेन विद इन द टारगेट्स, दैट इज टारगेट्स वर 4.4% ऑफ जीडीपी. टोटल स्पेंडिंग फॉर द ईयर came down to around 60,000 करोड़. एग्जैक्ट वैल्यू 59,000 करोड़ है. मत याद करो, 60,000 करोड़ याद कर लो, बहुत है. Bringing the expenditure to around 49 lakh crore rupees compared to the budget estimate which was 56.65 lakh crore rupees. Actual spending was nearly 7.6 trillion lower. सर क्या मजाक कर रहे हो? सर क्या मजाक कर रहे हो? तो मजाक क्या है? मजाक ये है भाई कि जो आपका बजट एस्टिमेट था एक्सपेंडिचर का वो था लगभग 56 लाख करोड़, 56 लाख करोड़. रिवाइज एस्टिमेट को कम किया गया एंड द रिवाइज एस्टिमेट वाज अराउंड 61,000 करोड़ और जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है सर दैट इज अराउंड 60,000 करोड़. ठीक है. तो इसको मैं 60 करोड़ कर लेता हूं ना, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा. ठीक है.
क्लियर हो गया? तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिवाइज एस्टिमेट से भी कम है, लेकिन बजट एस्टिमेट से तो लगभग लगभग 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स कम है। 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स कम है। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? तो एक सेकेंड मैं बता देता हूं मैं लिखना क्या चाह रहा था। 56 लाख करोड़ था, ठीक, 56 लाख करोड़ से ये कम हुआ, और एक्चुअल जो एस्टिमेट्स आए हैं दैट इज अराउंड 49 लाख करोड़, और जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे वो थे अराउंड 49.60 लाख करोड़। तो इनमें जो कम हुआ है वो 60,000 करोड़ हुआ है, बट ओवरऑल अगर हम देखें कितना अमाउंट कम हो गया तो मोटा मोटा 7 ट्रिलियन रुपीस, या फिर आप ये कहो कि 7.6 लाख करोड़ रुपीस का जो खर्च है वो कम हो गया। ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर देम। इसे इग्नोर किया तो एग्जाम में एक आधा नंबर जा सकता है। Both revenue expenditure and capital expenditure were cut down. Revenue expenditure was decreased as well as capital expenditure were decreased, and the sharper reduction in the capital spending played a major role in lowering the overall expenditure. On the receipt side, government has also witnessed a shortfall. Total receipts were lowered down by 20,000 crores in comparison to the revised estimates, mainly because revenue receipts fell short of expectations. जो आपकी revenue receipts हैं, they have fell short of because of decrease in expenditure done by the government. A notable positive factor was strong mobilization through small saving schemes, collection through instruments such as saving deposits, saving certificates, public provident funds exceeds the revenue exceeds the revised estimates by around 1 lakh crore. तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, इज इट बफरिंग गाइस? इज इट बफरिंग? कहां से रिपीट करूं? प्लीज टेल मी, कहां से रिपीट करूं? फ्रॉम वेयर शुड आई रिपीट? मैं अपनी ना इमेज ऑन कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम वेयर शुड आई रिपीट गाइस? कैन यू प्लीज टेल मी? पिछली स्लाइड पे जाऊं? पिछली स्लाइड पे जाऊं? कोई बात नहीं, बताता हूं। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि सर जो receipts हैं they have also dropped down by 20,000 crores, as well as expenditure has also been reduced by the government, which is around 60,000 crore. These two terms you have to remember. उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था मैंने क्या बताया कि अब जो आपका फिस्कल डेफिसिट है that has reduced, even it has reduced from the revised estimates, and now because of that reduction we have achieved the value of 4.4%. We have received the value of 4.4% of GDP. That is very much important. अगला पॉइंट है कि सर गवर्नमेंट के पास जो पैसा मोबिलाइज हुआ, गवर्नमेंट ने पैसा पब्लिक से रेज किया थ्रू स्मॉल सेविंग स्कीम्स, कलेक्शन किया ऑफ द फंड्स थ्रू सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, जिससे गवर्नमेंट के पास फंड फ्लो बढ़ा और उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स था दैट बिकेम ईजियर. As a result of using 457 billion cash drawdown that had been assumed in revised estimates, the government ended up with a better position, and this improved the opening cash is expected to support the government finance. तो in short हम ये expect कर रहे थे कि गवर्नमेंट का जो कैश है उसमें से गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 457 बिलियन कैश यूज कर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे कम है. सो इट्स स्ट्रॉन्ग. तो इसके इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ओपनिंग बैलेंस था इन टर्म्स ऑफ कैश होल्डिंग दैट वाज प्रीटी गुड. In April 2027, the government had already used 21.4% of its full year deficit target, much higher than 11.9% used in April 2025. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ में गवर्नमेंट ने यूज कर लिया 21.4% ऑफ फुल ईयर फिस्कल डेफिसिट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर यूज हुआ था सिर्फ 11.9. सर अब अप्रैल का मंथ ऐसा क्या मंथ है कि इतना सारा फंड्स यूटिलाइज हुआ? सर उसका रीजन बड़ा सिंपल है, दैट इज टैक्स रिटर्न्स
गवर्नमेंट ने जो पैसा आपसे रिसीव किया, नाउ यू आर फाइलिंग द रिटर्न्स एंड गवर्नमेंट हैज टू पे बैक दोज टैक्स रिटर्न्स, तो गवर्नमेंट का आउटफ्लो ऑफ फंड्स ज्यादा है। उसके साथ साथ मेनी ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे आल्सो मैच्योर during the April month, so government का outflow of funds in order to pay back against the government security is also high. So this leads to huge outflow of currency, especially in the month of April. But this time it has used 21.4% of full year fiscal deficit target, which is pretty huge in comparison to last year, which was only 11.9%. ठीक है जी. Looking ahead, fiscal outlook, if I talk about looking ahead, fiscal output for financial year 2026-27, it still remains mixed, not very strong, not very loose. Higher than budgeted spending on fertilizer and LPG subsidies could create pressure on budget. तो भैया ये कहा जा रहा है कि जो आपकी थॉट है, आपके टारगेट्स हैं, उससे ज्यादा यू विल बी स्पेंडिंग ऑन फर्टिलाइजर्स एंड एलपीजी सब्सिडीज, जिसकी वजह से योर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज. There will be lower revenue from from excise duty, from corporate tax and dividend payout from oil and marketing companies, which will again a challenge for the government. At the same time, import duties on gold and silver, which has been increased by the government, as well as availability of economic stabilization fund, will offer relief to the government fund management as well. Even with these supporting factors, ICRA has estimated that fiscal slippage could be around 0.3% of GDP compared with financial year 2026-27 budget estimate. कि भैया budget estimate कितना है? What is the budget estimate of fiscal deficit for 2026-27? Any idea? उसके मुकाबले as per ICRA, which is one of the renowned crediting agency of the country, it has estimated that भैया वो increase होगा by almost 0.3%, which is pretty huge. तो आप मुझे बताओ budget estimate क्या है for the fiscal deficit? ये क्या लिखा है भाई? 4.3%, 4.3%. Is it correct? Rishabh is saying 4.3. Any other destination? 4.3. श्योर, डन, ओके. अगर मैं केयर एज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इट हैज फ्लैग्ड दैट कंबाइंड बर्डन फ्रॉम सब्सिडीज एंड टैक्स शॉर्टफॉल एंड रेवेन्यू लॉसेस मे बी क्लोज टू 0.5% ऑफ जीडीपी. की भैया जो टोटल लॉस होगा गवर्नमेंट को ड्यू टू इंक्रीज इन सब्सिडी, डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यूज as well as other revenue reduce, it will give a debt or it will give a hit of 0.5% of GDP to the government. ठीक है, बस ये डेटा जितना मैंने मार्क किया उतना याद करना, इसके अलावा कोई और डेटा मत याद करना. दिस इज द फाइनल डेटा यू हैव फॉर योर एग्जामिनेशन. लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन. सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स टोटल एक्सपेंडिचर बाय 60,000 crores compared to revised estimates. This is correct. Capital expenditure witnessed larger reduction than revenue expenditure. That is correct. क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. भैया ब्रिज बनाना मत बनाओ, पैसा बच गया, लेकिन सैलरी देनी है वो तो मना नहीं कर सकते ना, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट है. सो दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. टोटल रिसीट्स exceeds the revised estimates due to higher tax collections. Total receipts exceeds, नहीं सर, receipts में भी there is a shortfall due to lower tax collection. Fiscal deficit was contained at 4.4% of GDP despite downward revision in the nominal GDP estimates. That is correct. Collection under the small saving schemes exceeds the revised estimates by 1 lakh crore rupees. This is correct. तो मेरे हिसाब से आंसर बनना चाहिए 1245. That is B option is the correct answer. बढ़िया. अगला क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. तो 3 क्वेश्चन है आज आपके लिए जो आप होमवर्क के फॉर्म में लेंगे. आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज आंसर इट बिफोर 12 AM एंड आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन ओनली एंड इवन आई विल हाईलाइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु विल बी आंसरिंग फर्स्ट. थैंक यू सो मच. आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर. जानबूझ के न्यूज को हल्का किया. आरबीआई अच्छी बात है, कोई नया सर्कुलर दे नहीं रहा एग्जामिनेशन से पहले, हमारे लिए बढ़िया. जो छोटी मोटी आरबीआई की नोटिफिकेशंस आ रही है, प्रेस रिलीज आ रही है, वो मैं कवर कर रहा हूं और जानबूझ के उन न्यूज को उठा रहा हूं जिन न्यूज को रीसेंट टाइम से पूछे जाने की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है. फॉर एग्जांपल ये डेटा उठाया, फॉर एग्जांपल कैम्बोडिया वाली न्यूज उठाई, फॉर एग्जांपल उससे पहले
आईआईपी वाली न्यूज उठाई, वो इसी थॉट से उठाई कि इन दिनों में अगर ये न्यूज है तो यहां से क्वेश्चन आरबीआई बनाएगा, उसी थॉट के साथ इसे डिजाइन किया। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिफोर लीविंग, डोंट फॉरगेट टू गिव मी दी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। नहीं यार अभी हुआ नहीं ऋषभ, अभी नहीं हुआ सर। जस्ट फॉर द नॉलेज हाउ दिस यूपीआई पेमेंट प्रोसेस वर्क्स बिकॉज कंट्रीज आर डिफरेंट, दैट इज वी नीड टू कैरी फॉरेन। ठीक है सौरभ, सुन लो, जिसको रुकना है वो रुके, जिसको जाना है वो जाए। देखो हमें ये तो पता ना कि यूपीआई जो है वो बेसिकली है क्या। यूपीआई एक, सुन लो सौरभ, सुन लो, यूपीआई को मैं बता रहा हूं, आप जिस तरह से मैं बता रहा हूं बस उतना ही समझना। अगर कोई टेक्निकल बैठा हो, कोई फाइनेंस का बंदा बैठा हो, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड बंदा बैठा हो, प्लीज मुझे जज मत करना, मैं उतना ही बता रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूपीआई एक एप्लीकेशन है। You register yourself with the help of your bank details on the UPI. The moment you register yourself with the help of bank details on UPI, UPI will create your username as well as password, which has nothing to do with the actual account details. That is the reason we call it as virtual payment address. The moment you get into the process of payments or receiving the funds or paying the funds, in that case, UPI application, for example, you are sending the funds, you are receiving the funds karte, you are receiving the funds from one of your friend and you have shared your number. The moment you will be sharing your number, your friend will enter that number in its UPI application, and the moment it will, from the phone number they will identify, or maybe from the UPI ID they will identify your UPI destination. तो यूपीआई डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई हो गई, नाम आ गया, फंड्स ट्रांसफर हो गए। अब फंड्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, पैसा डेबिट होने के बाद यूपीआई ऐप से ये इंफॉर्मेशन रन हुई, और इस इंफॉर्मेशन रन में ये फंड्स क्रेडिट हुए इनटू द रिसीवर्स अकाउंट। एंड ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व है कौन, बैंक्स, क्योंकि बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, बैंक अकाउंट से क्रेडिट होगा, एंड दे आर लिंक्ड थ्रू एनएफएस, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, अब इसको दूसरी नजर से देखो, ये इंडिया, ठीक है, अब इंडिया में जो भी यूपीआई का डेटा है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का, क्यूआर कोड्स का, दैट इज स्टोर्ड विद एनपीसीआई, और अलकेटा बैंक के पास केएचक्यूआर का सारा डेटा। तो जैसे केएचक्यूआर पे इंडिया के फोन से स्कैन किया गया, तो यहां से यूपीआई ऐप विल send the information of that QR to the NFS. From that NFS, the QR information will be sent to NPCI. NPCI वो information receive करेगा from the bank, और जैसे वो information receive होगी from the bank, तो इस बैंक को inform कर दिया, और NPCI ने अपने पास information ले ली। जैसे ही आपने यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके पे किया, the funds will be debited from your bank account and it will be credited into the Indian account only. और वहां से वो इंफॉर्मेशन एनपीसीआई से ट्रांसफर हुई इस बैंक पे, और वो बैंक आपके मर्चेंट के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर देगा इन दी कैम्बोडियन करेंसी। अब एनपीसीआई एंड एबी दे सेटल डाउन ऑन व्हाट बेसिस, सो दे सेटल डाउन ऑन प्री करेंसी स्वैप्स, they can do that, and if they're not doing pre currency swap, then they can even go for NRI settlements as well. तो एक्चुअल में फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिस्पेक्टिव कंट्रीज में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। दैट इज नॉट द वे कि भैया इंडिया के बाहर जाकर आपने कैम्बोडिया वाले को पैसा कैम्बोडिया में दिया तो कैम्बोडिया के सिस्टम से दे दिया, नहीं, वो फ्लो इंडिया के थ्रू ही होगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अगर इतना समझ आ गया मोर देन सफिशिएंट है। Yes, Jayesh, that is correct. Yes, Jayesh, that is correct. ठीक है guys, so that will be all. Don't forget to hit the like button. We'll catch you in the next session. Bye bye, take care, good luck, God bless you all.